वन्दे रुद्रं वरदममालं दण्डिनं मुण्डधारिं दिव्यज्ञानं त्रिपुरदहानं शङ्करं शूलपाणिं तेजोराशिं त्रिभुवनगुरुं तीर्थमौलिं त्रिनेत्रं कैलासस्थं गणपतिसखं पार्वतीनाथमीशम् शुक्ताकारं मुनिभिरनीशं चेतसि ध्यायमानं मुक्तागिरं शिरसि जटिले जानवीमुद्वहन्तं नानाकारं नवशशिकलाशेखरनागहारं नारीमिश्रं धृतनरशिरोमालमीशं नमामि। व्यालाकल्पविषमनना विद्रुमाताम्रभासो जायामिश्रा जटिलशिरश्चन्द्ररेखावतंसा नित्यानन्दा नियतललिता स्निग्धकल्माषकण्ठा देवा रुद्रा धृतपरशवस्ते भविष्यन्ति भक्ता। मन्त्राव्यासो नियमविधयस्तीर्थयात्रानुरोधो ग्रामे भिक्षाचरणमुद्रुजे बीजवृत्तिर्वने वा इत्यायासे महति रमतामप्रगल्भः फलार्थे स्मितेवाहं तव चरणयोर्निर्वृतिं साधयामि। अस्तं तावत् स्नपनमुपरि क्षीरधारा प्रवाहे स्नेहाभ्यङ्गो भवनकरणं गन्धपुष्पार्पणं वा यस्ते कश्चित् किरति कुसुमान्युत्तिशन् पादपीठं भूयो नैव भ्रमति जननी गर्भकारागृहेषु तिर्यज्ञो नौ त्रिदशनिलने मानुषे राक्षसे वा यक्षावासे विषधरपुरे देवविद्याधरे वा यस्मिन् कस्मिन् सुकृतनिलने जन्मनि श्रेयसो वा भूयाद्युष्मच्चरणकमलध्यायिनि चित्तवृत्ति योगी भोगी विषभुगमृतभृक्षस्त्रपाणिस्तपस्वी शान्तक्रूरशमितविषयशैलकन्या सहाय भिक्षावृत्तिस्त्रिभुवनपतिशुद्धिमानस्थिमाली शक्यो ज्ञातुं कथमिव शिव तं विरुद्धः स्वभावः उपदिशति यदुच्चैर्ज्योतिराम्नाय विद्याम् परम दूरं दूरमाद्यन्तशून्यम् त्रिपुरजयिनि तस्मिन् देवदेवे निहिष्टाम् भगवति परिवर्तोन्मादिनी भक्तिरस्तु। यत्कापालरतमपि महत्प्रष्टमेकान्तघोरं मुक्तेरध्वास पुनरमलपावन किं न जातः दाक्षायण्यां प्रियतमतया वर्तते योगमाया सा स्याद्धत्ते मिथुनचरितं वृद्धिमूलं प्रजानामिति विरचितमेतच्चारुचन्द्रार्धमौले ललितपदमुदारं दण्डिना पण्डितेन स्तवनमवनकामेनात्मनो नामयाख्यम् भवति विगतरोगी जन्तुरेतज्जपेन। वन्दे रुद्रं वरदममालं दण्डिनं मुण्डधारिं दिव्यज्ञानं त्रिपुरदहानं शङ्करं शूलपाणिं तेजोराशिं त्रिभुवनगुरुं तीर्थमौलिं त्रिनेत्रं कैलासस्थं धनपतिसखं पार्वतीनाथमीशम्। शुक्ताकारं मुनिभिरनीशं चेतसि ध्यायमानं मुक्तागिरं शिरसि जटिले जानवीमुद्वहन्तं
जटिलशिरश्चन्द्ररेखावतंसा नित्यानन्दानियतललिता स्निग्धकल्माषकण्ठा देवारुद्राधृतपरशवस्ते भविष्यन्ति भक्ता। मन्त्राव्यासो नियमविधयस्तीर्थयात्रानुरोधो ग्रामे भिक्षाचरणमुद्रुजे बीजवृत्तिर्वने वा इत्यायासे महति रमताम प्रगल्भ फलार्थे स्मितेवाहं तव चरणयोर्निर्वृतिं साध्यामि। अस्तं तावत् स्नपनमुपरि क्षीरधारा प्रवाहे स्नेहाभ्यङ्गो भवनकरणं गन्धपुष्पार्पणं वा यस्ते कश्चित् किरति कुसुमान्युत्तिशन् पादपीठं भूयो नैव भ्रमति जननी गर्भकारागृहेषु। यज्ञो नौ त्रिदशनिलने मानुषे राक्षसे वा यक्षावासे विषधरपुरे देवविद्याधरे वा यस्मिन् कस्मिन् सुकृतनिलने जन्मनि श्रेयसो वा भूयाद्युष्मच्चरणकमलध्यायिनि चित्तवृत्ति। योगी भोगी विषभुगमृतभृक्षस्त्रपाणिस्तपस्वी शान्तक्रूरशमितविषयशैलकन्या सहाय भिक्षावृत्तिस्त्रिभुवनपतिशुद्धिमानस्थिमाली शक्यो ज्ञातुं कथमिव शिवतं विरुद्धस्वभावः उपदिशति यदुच्चैर्ज्योतिराम्नाय विद्याम् परम दूरं दूरमाद्यन्तशून्यम् त्रिपुरजयिनि तस्मिन् देवदेवे निहिष्टाम् भगवति परिवर्तोन्मादिनी भक्तिरस्तु। यत्कापालरतमपि महत्प्रष्टमेकान्तघोरं मुक्तेरध्वास पुनरमलपावन किं न जात दाक्षायण्यां प्रियतमतया वर्तते योगमाया सा स्याद्धत्ते मिथुनचरितं वृद्धिमूलं प्रजानामिति विरचितमेतच्चारुचन्द्रार्धमौले ललितपदमुदारं दण्डिना पण्डितेन स्तवनमवनकामेनात्मनो नामयाख्यम् भवति विगतरोगी जन्तुरेतज्जपेन। वन्दे रुद्रं वरदममालं दण्डिनं मुण्डधारिं दिव्यज्ञानं त्रिपुरदहानं शङ्करं शूलपाणिं तेजोराशिं त्रिभुवनगुरुं तीर्थमौलिं त्रिनेत्रं कैलासस्थं धनपतिसखं पार्वतीनाथमीशम् तृप्ताकारं मुनिभिरनीशं चेतसि ध्यायमानं मुक्तागिरं शिरसि जटिलजाह्नवीमुद्वहन्तम् नानाकारं नवशशिकलाशेखरनागहारं नारीमिश्रं धृतनरशिरोमालमीशम् नमामि। व्यालाकल्पविषमनयना विद्रुमाताम्रभासो छायामिश्रा जटिलशिरश्चन्द्ररेखावतंसा नित्यानन्दानियतललिता स्निग्धकल्माषकण्ठा देवारुद्राधृतपरशवस्ते भविष्यन्ति भक्ता। मन्त्राव्यासो नियमविधयस्तीर्थयात्रानुरोधो ग्रामे भिक्षाचरणमुद्रुजे बीजवृत्तिर्वने वा इत्यायासे महति रमताम प्रगल्भ फलार्थे
यस्मित्तेवाहं तव चरणयोर्निवृत्तिं साधयामि अस्तं तावत् स्नपनमुपरि क्षीरधारा प्रवाहे स्नेहाभ्यङ्गो भवनकरणं गन्धपुष्पार्पणं वा यस्ते कश्चित् किरति कुसुमान्युत्तिशन् पादपीठं भूयो नैव भ्रमति जननी गर्भकारागृहेषु यज्ञो नौ त्रिदशनिलने मानुषे राक्षसे वा यक्षावासे विषधरपुरे देवविद्याधरे वा यस्मिन् कस्मिन् सुकृतनिलने जन्मनि श्रेयसो वा भूयाद्युष्मच्चरणकमलध्यायिनि चित्तवृत्ति योगी भोगी विषभुगमृतभृक्षस्त्रपाणिस्तपस्वी शान्तक्रूरशमितविषयशैलकन्या सहाय भिक्षावृत्तिस्त्रिभुवनपतिशुद्धिमानस्थिमाली शक्यो ज्ञातुं कथमिव शिव तं विरुद्धः स्वभावः उपदिशति यदुच्चैर्ज्योतिराम्नाय विद्याम् परम दूरं दूरमाद्यन्तशून्यम् त्रिपुरजयिनि तस्मिन् देवदेवे निहिष्टाम् भगवति परिवर्तोन्मादिनी भक्तिरस्तु यत्कापालरतमपि महत्प्रष्टमेकान्तघोरं मुक्तेरध्वास पुनरमलपावनः किं न जातः दाक्षायण्यां प्रियतमतया वर्तते योगमाया सा स्याद्धत्ते मिथुनचरितं वृद्धिमूलं प्रजानामिति विरचितमेतच्चारुचन्द्रार्धमौले ललितपदमुदारं दण्डिना पण्डितेन स्तवनमवनकामेनात्मनो नामयाख्यम् भवति विगतरोगी जन्तुरेतज्जपेन वन्दे रुद्रं वरदममालं दण्डिनं मुण्डधारिं दिव्यज्ञानं त्रिपुरदहानं शङ्करं शूलपाणिं तेजोराशिं त्रिभुवनगुरुं तीर्थमौलिं त्रिनेत्रं कैलासस्थं धनपतिसाखं पार्वतीनाथमीशम् शुक्ताकारं मुनिभिरनीशं चेतसि ध्यायमानं मुक्तगिरं शिरसि जटिले जाह्नवीमुद्वहन्तम् नानाकारं नवशशिकलाशेखरं नागहारं नारीमिश्रं धृतनरशिरोमालमीशम्